Raksha Bandhan, which occurs on 15th day of month of Ravan, can be stressed out in the ancient day of Puran. In the second part of Bhavishya Puran, there is a reference of Lord Krishna describing the importance of tying a sacred thread, symbolizing the promise of protection of life and prosperity. This theme was explained to Arjun and Yudhishthira by Lord Krishna. Later on, in Harismita and Bhagavad Puran, there were references of such sentiments expressed by Subhadra for her brothers Krishna and Balram. Since then, this ritual became popular as bond of protection between sister and brother. After the progression of the time, this bond of protection was adopted in Rajput royals also. When king used to go in battlefield for a long time, Maharani used to tie sacred thread on the wrist of the king. This festival penetrated in the field of art and literature. Many songs, poems, stories, and novels were written in the theme of Raksha Bandhan. Not only that, in modern age, many movies and television serials were also produced. This festival has commercially opened many directions too. Now Rakis are available from simple thread to Rakis studded with gold and diamonds. On this holy day of Raksha Bandhan, let us renew the vow of the protection and prosperity of our sibling. Thank you. मेरा मायका सजाए रखना, राखी भैया दूज पर मेरा इंतजार बनाए रखना, कुछ न देना मुझको चाहे, बस अपना प्यार बनाए रखना, पापा के घर में मेरी याद सजाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना, बेटी हूँ सदा इस घर की ये सम्मान संजोए रखना, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। ये दोनों ध्यान में रखना, ये हा सण का तयार झाला तर कृष्णाच्या वेळेला कुंतीनं त्याला बांधून ठेवलं, सांगून ठेवलं ही केवढी जबाबदारी आहे तुझ्यावर, आणि हे बंधन हे लक्षात ठेव, आणि हे युद्ध तयार झालेलं आहे, त्या युद्धाचं रक्षण करायचं काम तुझं आहे, कोणाला न्याय द्यायचा आहे तुझ्या हातात आहे, हे कुंतीनं कृष्णाला रक्षा बंधन करून ठेवलं त्या रेशमी काठीनं. त्यावेळेला रेशमी काठीमध्ये रेशीम म्हणजे रेशीम घट्ट असतात, कच्चा दोरा नसतो, रेशीम म्हणजे घट्ट दोरा. ह्या घट्ट दोऱ्याला त्याला आठवण राहावी म्हणून एक सोन्याचं पदर असं लावून देतो. पूर्वी हे रक्षाबंधन हे नारळी, आता जे आहे ते नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी करतात. नारळी पौर्णिमा सण आहे की समुद्राला आपण भरती होते त्यावेळेला नारळ त्याला मतदान करून टाकतो, आणि या दिवशीच रक्षाबंधन सुरू करतात. महाराष्ट्रामध्ये रक्षाबंधन करताना भाऊ बहिणी भावाला बहीण ओवाळते, म्हणजे हे का तर बहिणीचं रक्षण कोण करणार, यासाठी हे भाऊ आपला पाठीराखा आहे म्हणून त्याच्यासाठी हे रक्षण सुरू झालं. यासाठी त्यांनी बंधन त्या भावाला हे आठवण की माझी तुझी बहीण आहे आणि ह्या बहिणीचं तुला रक्षण करायचं आहे, यासाठी तेव्हा
कृष्णापासून जे ही चाल चालू झालेली आहे ती आताही आज तागायत आहे. महाराष्ट्रामध्ये बहीण तबक येते, तबकामध्ये निरंजन अक्षर कुंकू सर्व घालून भावाला त्यावेळेला जाणीव करून द्यावी लागते की हे तुझं रक्षण आहे, करायची ताकद तुझ्यात राहिली पाहिजे. म्हणजे हिला टिळा लावेल, त्याला येतं लावेल, अक्षर टाकेल, त्याचं उवाळेला औषध करेल, त्याला रेशीम गाठी त्याचं गोंधळ होईल आणि त्याच्या दृष्टीनं त्याला त्या बंधनामध्ये त्याला घट्ट बांधून ठेवते ती बहीण. ह्याच्यासाठी हे रक्षाबंधन आहे. किती झालं तर एक बायकांना थोडंफार रक्षण हे हवंच, कारण किती झालं तरी त्याला बाई म्हणून ही थोडीशी अजूच असते. त्याच्यामुळे तिचा फायदा इतर लोकांनी कोणी घेऊ नये म्हणून त्याला भावाच्या बंधनामध्ये बांधून ठेवायचं. म्हणजे तोही माणूस आपल्यासाठी वक्र दृष्टीने कधी पाहणार नाही. या दृष्टीनं महाराष्ट्रामध्ये जास्त करून हा सण जास्त करतात की हे बंधन असल्या म्हणजे सगळीकडे शांतता चांगली राहू शकते. म्हणून रक्षाबंधन हे चांगलं. I'll give you this is fairly kind of comprehensive talk about it. All right. So about Raksha Bandhan, the bonding between a brother and a sister एक नहीं तीन राखी है, 3 बहनों की तरफ. ज्यादा मजबूत पकड़ आना. नहीं नहीं, आपको 3 बार देना पड़ेगा. Brother-sister relationship, which does not mean just the blood relationship only. It is also celebrated among cousins, sisters, sister-in-law, Bobby, fraternal aunt, Bua, and nephew, and other such relations. Now, importance of Raksha Bandhan amongst various religions. Hinduism, the festival is mainly celebrated by the Hindus in the northern and western parts of India, along with countries like Nepal, Pakistan, and Mauritius. Jainism, the occasion is also revered by the Jain community where a Jain priest gives ceremonial bread to the devotees. Sikhism, the festival devoted to the brother-sister love, is observed by the Sikhs as Rakhi or Rakhi. All right. The festival of Raksha Bandhan is known to have originated centuries before, and there are several stories related to the celebration of the special festival. Some of the various accounts related to the Hindu mythology are described below, which is, there are several, which is Santoshi Man, then Yama, Yamuna, and so on. I picked only one, Draupadi and Krishna. While Draupadi was being disrobed by Kauravas,
Lord Krishna appeared and saved her honor. At that time, Draupadi saw a wound on Krishna's wrist. She immediately tore a piece of her sari and tied to Krishna's wrist. So that's what we think originated Raksha Bandhan. And immediately Krishna had injured his wrist while using his Sudarshan Chakra against King Shishupal. At that time, when Draupadi tied a piece of sari on his wrist, Krishna was then very pleased and promised Draupadi to protect her forever. That's how the rest of the thing goes. Now, reason for the celebration of this festival. The festival of Raksha Bandhan is observed as a symbol of unity between brothers and sisters. The occasion is meant to celebrate any type of brother-sister relationship between men and women who cannot be biologically related. On this day, a sister ties a rakhi around the wrist of her brother in order to pray for his prosperity, health, and well-being. The brother in return offers a gift and promises to protect his sister from any harm and under any circumstances. The festival is also celebrated between brother and sister belonging to distant family members, relatives, or cousins. We think that ये रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का है, बट लेकिन ये स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, सतयुग में स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम सबसे पहले जो राखी बांधी थी वो इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को बांधी थी। जब इंद्र देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा था तो राक्षस लोग मारे नहीं जा रहे थे और इंद्र को मारने की सोचते थे वो लोग। तो वो शची जाती है विष्णु भगवान के पास कि ऐसे करके कुछ आप करो जिससे कि इंद्र को बचा सके। तो उन्होंने एक मंत्र वाला धागा दिया था जो कि शची ने अपने पति को बांधा था बचाने के लिए। धीरे धीरे भाई बहनों में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये इस त्योहार में बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाती है और भाई की जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। भाई भी बहन को मिठाई खिलाता है और उपहार देता है। तो रक्षाबंधन की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, जैसे कि इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को राखी बांधी थी। दूसरी है यमुना ने उसके भाई यम को राखी बांधी थी। तीसरी हम लोगों को सबको पता है कि द्रौपदी ने कृष्ण जी को बांधी थी। तो ऐसे ही करके बहुत सारी हैं। इवन पौरस जो हमारे राजा थे उनको सिकंदर की वाइफ ने राखी भेजी थी कि सिकंदर को आप कोई नुकसान नहीं करना। तो उन्होंने इवन उस राखी को देखे पौरस हथियार नहीं उठा पाए थे सिकंदर पे और सिकंदर ने उनको कैद कर लिया था, जबकि बाद में सब कुछ वापस कर दिया था। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको एक मेन कहानी सुनाना चाहती हूँ जहाँ की लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। तो राजा बलि राक्षसों के राजा थे। उनके बारे में ये बहुत मशहूर था कि वो बहुत बड़े दानी हैं कि अगर किसी को कुछ देने का प्रॉमिस कर लिया तो उन्होंने कर देना ही देना है। तो उन दिनों में राक्षसों का बहुत ज़्यादा राक्षस बढ़ गए थे, उनके अत्याचार बढ़ गए थे। तो भगवान विष्णु ने बहुत बारी अलग अलग रूप लिए हैं, अवतार लिए हैं। तो ये है वामन अवतार की कहानी। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ये राजा ने अपना यज्ञ, राजा बलि ने यज्ञ किया था, तो अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो राक्षसों का राज हो जाएगा। तो उसको कैसे खत्म किया जाए? तो विष्णु जी भगवान वामन का अवतार लेते हैं और राजा बलि के द्वार पे पहुंचते हैं ब्राह्मण बन के कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो इवन शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने बलि को कॉशियस किया कि नहीं,
ये विष्णु की चाल है, तुम मत प्रॉमिस करो। तो लेकिन बलि ने कहा जब भगवान खुद मेरे द्वार पे आए मांगने के लिए तो मैं मना नहीं कर सकता। उन्होंने हाँ कर ली और वामन जी विष्णु भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तो कहते हैं मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? तो बलि ने कहा, वो लेट गए और कहते हैं मेरे सिर पे रखो। तो जैसे ही विष्णु भगवान ने पैर रखा वो पताल में चले गए। तो विष्णु भगवान ने पताल का राजा उनको बना दिया। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बता क्या चाहिए तुझे? कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे द्वार पे आप द्वारपाल बन के रहोगे। तो विष्णु भगवान वहाँ रहने लग जाते हैं और इधर लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो जाती है कि विष्णु भगवान वापस नहीं आए। तो वो उसको पता लगता है कि वो राजा बलि के यहाँ आए। वो एक साधारण औरत बन के वहाँ जाती है और कहती है कि मेरे पति तो घर से चले गए और मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे आप रख लो। वहाँ वो उनको रख लेते हैं। तो वो वहाँ रहने लग जाती है, एज ए बहन बलि रख लेते हैं उनको। तो जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो उस दिन वो राखी बांधती है। तो जैसा कि भाई उपहार देते हैं तो राजा बलि कहते हैं बता मुझे क्या चाहिए? तो कहती है, फिर वो असली रूप में आ जाती है कि विष्णु तुम्हारे पास है तो उनको मुक्त कर दो। राजा बलि उनको भेज देते हैं वापस स्वर्ग। लेकिन फिर भी आज तक विष्णु भगवान 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चतुर्मास। श्रावण की एकादशी से और they will fire and how they were saved. So the story is very long. So I have it and I'm going to post it in Guru Parivar. So you guys can read it. But Raksha Bandhan's meaning is different in every religion, and Jainism believe this story. How true it, I don't know. No, but how does it relate to Raksha Bandhan or Janmashtami? They started Raksha Bandhan from that day. What was that day? The Muni and 700 sadhu. Yeah. They were saved from the fire. That 4 of them bad people were trying to kill them, and they were saved with the Devi of the jungle. And I don't know the very detail, but it is a different beliefs that how they celebrate the Raksha Bandhan, how it started. But same day, right? Yeah, same. Yeah. So I will send it, forward it to Guru. Sure. Which is a long story. राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे। ये दिन ये त्योहार खुशी का
इंतजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की गुड़िया जैसी तू, भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की गुड़िया जैसी तू। ला 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 ला, डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी रहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। Go to the priest, they form. In fact, the traditions have changed. They all sit in a circle, young boys, old men, everybody, and they change their janoi. They put on a new one that day. So, the priest will come to the house the week before that, and he will give the lady of the house the janoi that is to be changed. And along with that, he will always give a yellow thread. In South, in Tamil Nadu, when we wear Mangal Sutra, we have 2 sets. One is worn always on the neck on a gold chain. It will be shaped like an M with 2 gold beads. On the end, there will be a tulsi mat and then a moon and a star sign. And the other one will always be on a yellow thread, and that is what is tied on your neck the day of the marriage. And that thread you change on the day of Amnevatta. So the day the men change their janoi, the women change their the Mangal Sutra ka dhaga and keep it that way. So I'm going to read a little bit about this Amnevatta because it makes it easier this way. Amnevatta, also known as Upakarma, means beginning, commencement, make the beginning of, or to study the Vedas. Now, the Vedas are 4. You have Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. The 3 Vedas to which this is the Rig Veda, the Sama Veda, and Yajur Veda are the ones that practice all these, practice this particular festival. So, when a janoi is put on the day when the boys usually turn 7, that is when the grandparents will start. Oh, ladka bada ho gaya hai, abhi iska janoi karna hai. 7 years old is usually traditionally when it's done. So on that day, there will be a big function, there will be a havan, and the boy will be given his first janoi. Now, the janoi that is given to him, if I can open this, it comes as 3 threads. The Prohit gives these to you. So like I said, he will come to the house and give it. So even here, my son wears one. I think my husband wears one. I'm not checked. But see, it comes and spread out on the floor, and you make different colors of rice. Why different colors? To attract the birds. We feed the birds on that day. So you keep one meetha chawal, one haldi ka chawal, one kumkum ka chawal, all nutritious, healthy kind of food. And then khane pe, you invite your brother. Your brother comes. The same thing we do for Kartik Purnima. During the Kartik star which comes in the month of December, Kartik Purnima, on that day too, we celebrate Bhai Dooj, where we make
like like kurmura, the seed that you get from the grain, we make laddus out of that.